Quickly join. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Abhay. Yes, ma'am. How are you, ma'am? I'm good, Abhay. Thank you. Okay, ma'am. I am also good, ma'am. Good. All right. So now, who will tell me what are quantifiers? Come on. We have done this topic before, so please. Ma'am, quantifier is describe quantity, ma'am, Okay. of any noun, pronoun. Charger. Okay. So quantifier is an expression that indicates the scope of a term which is attached, means which tells us indicative of quantity of something, which tells us the quantity, right? So quantifier kya hota hai? It's a determiner or a pronoun which indicates the quantity of a noun, जो हमें noun की quantity बताता है. Sorry. Okay, let's start with the first slide quickly. Someone please read who knows good Hindi as well as English. No one is interested in reading? Ma'am, can I read, ma'am? Yes, Abhay, please, you can read. She was wearing a ring on each finger. उसने प्रत्येक उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी. Right. She calls me every day. वह मुझे हर रोज फोन करती है. Each और every दोनों के ठीक बाद सिंगुलर नाउन आता है. इनका मतलब करीबन एक जैसा ही है, पर ध्यान रखें कि अगर सिर्फ दो चीजों व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहे हो तो ईच इस्तेमाल करें. Okay, very simple. She was wearing a ring on each finger. So हमारे हाथ में कितनी fingers होती हैं? We have 5 fingers, right? So हम यहाँ पे बोल रहे हैं she was means we are talking about a girl. She was wearing ring in each finger. उसने अपनी हर एक उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी. तो each fingers क्या है? नाउन है. हमें नाउन की क्वांटिटी बताई जा रही है. कितनी है? 1 2 3 4 5. each से हमें पता चल रहा है हर एक. Okay. Ma'am is coming very soon for start the class. Deepak, I have already started the class. Good morning, Dharmik. Non-pro students, you can see me, right? Okay. Yes, so, ma'am, I see. Thank you. She calls me every day. वो मुझे हर रोज फोन करती है. Now, each and every day, both are your quantifiers because they tell us the quantity of noun. Each finger, and every day. So, each or every, they both are used just after a singular noun. Please understand this. Singular noun, one noun. Each means ek, every means ek. Whenever we are talking about single things, that time we use each and every. Okay, and their meanings are almost same, but what is the difference? If we are talking about things and people, so we only use each, and every is for everything. All right, for example, each of my student is very intelligent, right? Every student is intelligent. So we can use both. They're similar in meanings. Yes, ma'am. Now I can see you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Next slide. Someone please read. कभी कभी उम्मीद और एवरी का प्रयोग अमन नाते के लिए भी करते हैं. जब वक्त प्रयोग व्यक्ति के
बारे में बात करता है। तो ईच और समूह के बारे में बात करने के लिए एवरी का प्रयोग होता है। ईच बॉय वॉज गिवन द स्कूल यूनिफॉर्म। यह प्रत्येक एक लड़के की बात की जा रही है। एवरी बॉय वॉज गिवन द सेम स्कूल यूनिफॉर्म। यह पूरे समूह की बात की जा रही है। सो हेयर कभी कभी हम ईच और एवरी का प्रयोग समान अर्थ के लिए करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था, ईच ऑफ माई स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, राइट? तो हम सेम चीज के लिए यूज कर रहे हैं। जब वक्ता, व्हाट इज वक्ता? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हर इंसान के बारे में बात करता है तो ईच, और समूह के बारे में बात के लिए एवरी का यूज होता है। सो इफ माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आई विल यूज each. But if I'm talking about all the group or all the students, and I will use every, right? For example, each boy was given the school uniform. हर बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म दी गई। every boy means बहुत सारे थे, तो every boy was given the same uniform. यहाँ पूरे समूह की बात की जा रही है। alright, सो आई बिलीव यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम ईच एक के लिए बोल रहे हैं, एवरी हम सब के लिए बोल रहे हैं, सब, हर एक। ओके, योगिता प्लीज रीड। Each of us have different views. has फिर से पढ़िए। Each of has different views. फिर से योगिता। Us has different views. हम में से प्रत्येक के अलग अलग विचार हैं। Each के बाद बहुवचन संज्ञा भी आ सकती है, लेकिन इसका प्रयोग ऑफ डिटरमाइनर या सर्वनाम के साथ किया जाना चाहिए और क्रिया का एक वचन रूप ही होगा। I will never manage to talk to each of my employees. मैं हर एक कर्मचारी से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। Okay, each of us has different views. Now just understand one thing, each के साथ हम has का यूज कर रहे हैं, हम have का यूज नहीं कर रहे, because each हम एक इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, and whenever we talk about third person singular we always use has, right? So each of us has different views. For example, we are talking about politician और पॉलिटिक्स, राइट? तो सबके क्या है, अलग अलग व्यूज है। सो ईच ऑफ अस हैज डिफरेंट व्यूज। आई विल नेवर मैनेज टू टॉक टू ईच ऑफ माई एम्प्लॉयज। आई हैव सो मेनी एम्प्लॉयज, तो हर एक से बात करना मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। तो इस चीज को समझिए, दैट व्हेन वी आर यूजिंग ईच वी कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन, बिकॉज ईच का मतलब ही है एक, राइट? सो अस प्लूरल हो गया। एम्प्लॉइज, अनदर वर्ड एम्प्लॉइज, ईच ऑफ माई एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय नहीं होगा। Am I audible, ma'am? Yes, Asma, you are audible. Ma'am, vakta means a speaker, na? You said subject. Subject means karta, not vakta. Whatever, you understood, right? Yes. Okay, now I believe this is pretty clear with these two slides. What are quantifiers? Each or every का हमें कहाँ use करना है? Let's start with the quiz. Does dash of you have a copy of the paper? Does each of you or does every of you? मयंक, प्रिया मिश्रा, मुझे अगर आप लोग बात करते हुए दिखे, I can block you. So it is better focus on the topic. Asma, please answer. First one, ma'am. Does each of you have a copy of the paper? Yes, does. Now यहाँ पे हम each का यूज कर रहे हैं, each of you. Every of you नहीं यूज होता। each के साथ of लगता है, every के साथ of नहीं लगता। ठीक है?
हमने यहाँ पे हैज क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने तो बोला था ईच के साथ हैज यूज करना है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग डज. ठीक है, डज के साथ हमेशा हैव यूज होता है, एंड इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो ये होता ईच ऑफ अस हैव अ कॉपी ऑफ पेपर. अस हो जाता है यूज. ठीक है, डज ईच ऑफ यू हैव अ कॉपी ऑफ द पेपर, राइट. दीपक, अब्दुल, प्रिया मिश्रा, अल्तमश, सोमा, अथर. इसलिए मैं बोल रही हूँ बातें ना हो क्लास में, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स वरना आप लोग देते रहेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Last year, dash student had to pay the same fee. Every student, both student, all student. Abhay, please answer. Vipul, धार्मिक. स्टूडेंट्स आप लोग प्रो लर्नर्स हैं, आप शायद भूल जाते हैं that you have the speaker. You can just unmute your Am I answer? mic and speak. Yes, you can answer. Last year, every student had to pay the same fee. Yes, so last year every student, हर स्टूडेंट को सेम फी पे करनी पड़ी थी, had to pay. बोथ के साथ यहाँ पे अगर बोथ होता तो स्टूडेंट्स आता, प्लूरल हो जाता. ऑल के साथ स्टूडेंट्स आता, दो या दो से ज्यादा सारे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड. She seems to be getting prettier. Dash time I see her. All time, single time, each time. Kavya, please answer. She seems to be getting prettier each time I see her. What is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence is जितनी बार, या मैं उसे देखता हूँ जितनी भी बार, each time हर बार, हिंदी में हर बार होगा वैसे. She seems to be getting prettier, वो और सुंदर हो जाती है हर बार जब भी मैं उसे देखता हूँ या देखती हूँ. सॉरी. ऑल टाइम नो, ऑल के साथ द लगता है, ऑल द टाइम. सिंगल टाइम नो, सिंगल के साथ यहाँ पे अगर ईच टाइम होता तो ठीक रहता, वही हमारा सही आंसर है. या फिर एवरी टाइम भी ठीक था, तो सिंगल टाइम कुछ नहीं होता. थैंक यू सचिन. नेक्स्ट स्लाइड. She was wearing beautiful bracelets on dash hand. All hand, each hand, every hand. Mayank, please answer. Pooja. She was wearing a beautiful bracelet on each hand. Yes, bracelet. Bracelet, no? Pooja, bracelet. She was wearing beautiful bracelets. वो अपने each हाथ, कितने हमारे हाथ हैं? दो, तो उसने ब्रेसलेट्स, बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट्स पहन रखे थे. She was wearing. Past continuous. Next. Dash of my friends
kissed me goodbye. Each of my friends or every of my friends. धार में कितना डिफिकल्ट है समझना कि एवरी के साथ ऑफ यूज ही नहीं होगा. Sachin, please answer. Each of my friends kissed me goodbye. Each of my friends kissed me goodbye. Her, for example, just let's take a hypothetical situation that a person is going abroad for further education. So सब उसे goodbye कर रहे थे, right? तो goodbye में everyone kiss me a goodbye. For example, kiss on the cheek, right? A friendly kiss. Next slide. Almost dash person I know likes chocolate. Each person, every person, both person. Maya, please answer. Shrikant. Ma'am, it is the almost every person I know like chocolates. Yes, like नहीं है, likes है, likes, person likes. Almost जितने भी मतलब लोगों को मैं जानती हूँ सबको ही चॉकलेट पसंद है. Everyone, every person, everyone कुछ भी हो सकता है. I know likes chocolate. राइट ऐसे काफी कम ही लोग होते हैं जिनको चॉकलेट नहीं पसंद होती. नेक्स्ट स्लाइड. The Olympic Games are held dash for 4 years. Each 4 years, every 4 years. So Voshri, please answer. The Olympic Games are held every 4 years. Yes, every 4 years. हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं. राइट हिंदी every, right. Okay, next slide. In a game of tennis, there are 2 or 4 players. Dash player has a racket. Each, all, both. Still facing network issue while using Telegraph. Yogita, please answer. In a game of tennis, there are 2 or 4 players. Each players have a racket. अच्छा, each में अब मुझे बताइए players कहाँ लिखा है और have कहाँ लिखा है. Read again, please. In a game of tennis, there are 2 or 4 players. Each player has a racket. Right. Yogita, please work on your reading a bit because your speaking is good, but you make these mistakes while reading. So, टेनिस के गेम में 2 और 4 प्लेयर्स होते हैं और हर प्लेयर के हाथ में या हर प्लेयर के पास रैकेट होता है. राइट बिना रैकेट के वो कैसे खेलेंगे. सो ईच प्लेयर. Next slide. Sarah plays volleyball dash Thursday morning. Every Thursday morning or all Thursday morning?
Asma, please answer. Sarah plays volleyball every Thursday morning. Yes. So for anything that we do once in a week, once in a month, every Sunday, every Monday, we say like this. For example, every day I take sessions twice in a day, right? Sarah plays volleyball. Next slide. I tried to call her 2 or 3 times, but dash time there was no reply. All time, each time, both time. Hajra, please answer. I tried to call her 2 or 3 times, but each time there was no reply. Yes. तो मैंने हिंदी में जैसे नॉर्मली बोलते हैं, मैंने उसे 2 से 3 बार फोन करने की कोशिश की, पर उसने हर बार फोन का जवाब नहीं दिया. तो हर बार मीन्स ईच टाइम. ऑल टाइम इज सारा टाइम. रॉन्ग. बोथ टाइम, दोनों टाइम. तो हम 2 टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे, हम 2 से 3 की बात कर रहे हैं. तो हर टाइम जब भी मैंने उसे कॉल किया, हर दफा उसने फोन नहीं पिक किया. There was no reply. Mohammad Raqib, it's Mayank, Shrikant, Bhuneshwar, Atike. Incorrect response. Guys, ध्यान से आंसर करिए. Next. Neha has read dash book in the library. All book or every book in the library? All right. Kavya, please answer. Neha has read every book in the library. Yes, नेहा ने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ी हुई है. Wow, she has read every book in the library. Next. Our football team is playing well. We have won dash single time this season. Each single time, every single time, all single time. Mayank, do you want to answer? ये माइक ऑफ करके बैठना है. मोहम्मद तंबोली, प्लीज आंसर. Our football team is playing well. We have won every single game this season. वॉन नहीं, वन. वन. Won. One. यस. Okay. सो हमारी जो फुटबॉल टीम बहुत अच्छा खेल रही है. हमने इस साल के हर गेम को जीता है. वी हैव वन every single game this season. Okay, each single no, all single no. अगर यहाँ पे होता all the games तो यहाँ पे all यूज होता, the यूज होता, games यूज होता. each game होता तो ये ठीक होता. सिंगल और each एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम है. हर एक, सिंगल का भी एक है, each का भी मतलब एक है. every single game is the right answer. काव्या, आसमा, धर्मिक, श्रीकांत, योगिता, अंश. इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. मैम, हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? नेहा, बिल्कुल पूछ सकते हैं. दिस कमेंट बॉक्स इज फॉर नॉन प्रो लर्नर्स जो बोल नहीं सकते, बट यू कैन डेफिनेटली राइट एनी कमेंट टू आस्क एनी क्वेश्चन. और किसी का तो मुझे कुछ आंसर्स के अलावा नहीं क्वेश्चन दिख रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. There are 6 apartments in this building. Dash has 1 balcony. Each one has, everyone has.
Maya, she's not answering. Yes, ma'am. Maya, please answer. Yes, yes. Good afternoon. There are 6 apartments in this building. Each one has a balcony. Yes, Maya, why don't you join the evening session? Means I remember you're so excited about the speaking part, and now when I am taking speaking sessions, you don't join. Ma'am, in winters it's difficult for me. I'm a homemaker and there is a lot of work with kids. Oh. It is really difficult, ma'am, in the evening. Oh, okay. In the evening, it's difficult. All right, all right. So there are 6 apartments in this building. Is apartment with इस building में 6 apartments हैं. Each one has a balcony. हर अपार्टमेंट में एक बालकनी है. ईच वन हैज अ बालकनी. सो ईच वन के साथ हम हैज यूज कर रहे हैं, हैव नहीं यूज कर रहे. योगिता, काव्या, धार्मिक, इट्स मयंक, अंश, बांके. इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. धार्मिक, काव्या, योगिता, क्या प्रॉब्लम हो रही है? एवरीवन नहीं होगा ना. एवरीवन तो हम इंसानों के लिए यूज करते हैं. एवरीवन इज टॉकिंग इन द क्लास. और अपार्टमेंट तो इंसान नहीं है ना. लेट्स मूव अहेड. I understood most of what they said, but not dash single word. But not each single word, every single word. Pooja, please answer. I understood most of what they said about not every single word. But not every single word. Yes. So sometimes it happens when you don't know the language or when you don't know the meanings of some words. So you understand something when someone is talking, but not every single word, right? आपको समझ आ जाता है ओवरऑल उस इंसान ने क्या बोला है, बट हर एक लफ्ज नहीं समझ में आता. सो दिस इज द सेम थिंग. सॉरी. I understood most of what they said. मुझे समझ में आ गया उन्होंने ज्यादा क्या बोला, मोस्टली क्या बोला, but not every single word. सेम चीज जो मैंने अभी पीछे बोली थी, ईच और सिंगल का मीनिंग सेम होता है, तो ईच सिंगल वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा. एवरी सिंगल वर्ड. The book is divided in 5 parts and dash of these has 3 sections. Both, every, each. Okay. Sachin, please answer. The book is divided in 5 parts and each of these has 3 sections. Yes, we are talking about a book. एक book 5 parts में divided है और उन 5 parts के 3 sections हैं. Each of these has 3 sections. Last slide. There is a train to London dash R. Every, each. Sachin, Maya. Incorrect response. Guys, each R कैसे होगा? Shrikant, please answer. Bhupinder, keep yourself on mute. Subhoshri. There's a train to London every hour. Yes, there is a train to London. हर घंटे
लंदन की ट्रेन है, मतलब देयर इज अ ट्रेन, आप हर घंटे लंदन ट्रैवल कर सकते हैं. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट, बट या मे बी. सचिन प्लीज हेल्प मी. सचिन माहा आपकी क्या हेल्प मांग रही हैं? I can't see comment. अच्छा, आज आपको कमेंट्स नहीं दिख रहे. I actually don't know why we don't get comment of non-pro members. Sometimes we get, sometimes we don't get. Don't know. It happens. So you can talk to her if you want. माहा प्लीज हेल्प के साथ आगे हेल्प भी ये भी लिखिए कि किस चीज में आपको हेल्प चाहिए. ऑन टॉप सुभोश्री, शिवांगी, हाजरा, विदुषी, आसमा, योगिता, काव्या, गलपाड़. And the final score is बांके. ये चीटिंग से आए आपके आंसर, क्योंकि you were giving incorrect responses. No man's far. Ma'am, how to do cheat here? Good question. Good question. So Good Shrikant, it's question. very simple. Like first, let me just show you. For example, this is your slide. You have given incorrect response. Okay. So what you can do, you can simply refresh the page, and the page will again show you the question, and now you can give the incorrect. You can give the right answer. I have did that, man, but in my case, I it's have never. did that. No, I have done that. Sorry, I have done that, but it has never happened with me. I have 27 coins right now. So It It never happens happened with in. coins. It never happened in pro membership, but It if happens you are with attending, non-pro. yeah, Yes, I've heard about it. So he is a non-pro learner. That's why he got this. So these many coins, like 1,000, no, 3 something, 234 coins. Rakib. Okay. So now people, what we can do, we can definitely practice each and every, because I believe some people still have some confusion. So let me be very clear. Each and every are both used with singular nouns to indicate quantity. Each और every दोनों ही singular noun मतलब एक noun के लिए use होते हैं उनकी quantity बताने के लिए. Each indicates 2 or more items. Each जो है एक, दो से ज्यादा चीजें दिखाता है. Whereas every indicates 3 or more items. Okay, when 3 or more items are involved, we tend to use each when we are talking of the items individually, and every when we are thinking of them collectively. हम यहाँ पे बात करें 2 से 3 चीजों की, तो 2 से 3 चीजें जब हम अलग अलग बात करें वहां पे हम each का यूज करते हैं, और अगर हम उन्हें collectively यूज करते हैं तो हम every का यूज करते हैं. For very simple example, I have many students. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं. Each of my student is intelligent. हर एक मेरा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है. यहाँ पे सेम सेंटेंस में मैं एवरी का भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं एवरी में सारे स्टूडेंट्स को इंडिकेट करूंगी. ऑल माई स्टूडेंट्स या एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माइन. यहाँ पे एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन आएगा. एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन इज इंटेलिजेंट. अब थोड़ा सा आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया होगा दैट ईच एंड एवरी आर बोथ यूज विद सिंगुलर नाउन्स टू इंडिकेट क्वांटिटी. मेन हमें क्या समझना है कि व्हाट दे इंडिकेट क्वांटिटी. Ma'am, what is the difference between my और mine? माई यूज होता है सेंटेंस की बिगिनिंग में. माइन यूज होता है, माई एज अ सब्जेक्ट वी यूज, माइन वी एज एन ऑब्जेक्ट वी यूज. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फोन. This phone is mine. This is the only difference. Okay? Yes. All right. Now we still have 15 minutes. One doubt, ma'am. I have one doubt, ma'am. Please ask. Ma'am, each of my student or each of my students? Each of my students. Plural हो जाएगा ना? Okay. Plural लगाएंगे, ma'am. उसके साथ is लगेगा. Yes. Each of my students is intelligent. Okay. Okay.
Okay, for example, each is smiling. For example, I have toys, each is smiling. दो है, each is smiling. Both are smiling. Both दो के लिए यूज होता है, both are smiling. For example, let's talk about cricket. In cricket, each team, where we have many teams like Indian team, Pakistani team, Australian team. Each team has 11 players, right? हर टीम में, each team में has कितने होते हैं? 11 players. तो टीम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ has यूज होगा. For example, I wear rings in each fingers. हर उंगली में मैं रिंग पहनती हूँ. Okay, and so each is always used with the each or for two things. ठीक है, दो चीजों के साथ और उससे ज्यादा के लिए हम each यूज करते हैं. Every is used when referring to all the members of a group of 3 or more. हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, 3 से ज्यादा चीजों के लिए हम every यूज करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए हम each यूज करते हैं. I have one doubt. Yes, please ask your doubt. Ma'am, what is the meaning of Eve? हर एक. Eve, EVE. ईव तो शाम को बोलते हैं योगिता. फॉर एग्जाम्पल, कल क्रिसमस है तो आज की जो शाम होगी वो क्रिसमस ईव होगी, क्रिसमस की शाम, क्योंकि कल क्रिसमस है. जैसे न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कब होता है? 31st को, क्योंकि 12 जब बजते तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है. तो वो हम उसे बोलते हैं न्यू ईयर्स ईव. ओके मैम. 31st को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कल आपका बर्थडे है तो आज जो है वो आपकी क्या है? बर्थडे ईव, क्योंकि 12 बजते ही अगला दिन लग जाता है ना, इसलिए. यस. All right, people, any questions? Ma'am, there is one question, but not about each and every, ma'am. It is little different. Ma'am, there is a phrasal verb break up. So Yes. can we, yes, ma'am, can we use it for relationships when, yeah. But Yes. can we also use it when we want to tell about something is going to break? Like, it is not going to break up. It is not going to break up. Is it correct? Can we use like this? No. Because Maya, the meaning of breakup is to come to an end. Come to an end. कोई चीज जो एंड पर आ गई है उसके लिए हम ब्रेकअप का यूज करते हैं. एंड, फिनिश. तो कोई चीज जो टूट रही है तो वो तो ऐसे नहीं होती ना, वो अलग हो गया. ठीक तो है. मैम, हम अगर if we want to frame a sentence that someone is hitting hard to a wall, yes, and we want to say that it is not going to break. हाँ, तो ये ठीक है ना, it is not going to break. Every phrasal verb is not what do we call, suitable. Every phrasal verb is not suitable for every sentence. Phrasal verb का अपना meaning होता है जो हम उसे सही उसमें यूज करें. Right? So break का मतलब तोड़ना ही होता है, टूटना, तोड़ना. बट उसमें अगर आपने अप लगा दिया उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है. उसका मीनिंग हो जाता है कम टू एन एंड, एंड, फिनिश, स्टॉप. ये 3 मीनिंग है अगर सिमिलर मीनिंग्स आप देखो तो. टर्मिनेट, किसी चीज को वो करना. मैडम, तो हमको ये बोलना है वो टूटने वाला नहीं है तो उसको इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. यहाँ पे सिंपल आपका ये मीनिंग आएगा. ब्रेकअप आप किसी चीज के साथ नहीं यूज कर सकते. सिर्फ आप रिश्तों के साथ जो हम यूज करते हैं, जैसे इसका उससे ब्रेकअप हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, वही उसका सही यूज है. मैम, और मैंने एक और फ्रेजल वर्ब पढ़ा है, ब्रेक ऑफ. ब्रेक ऑफ किसके लिए यूज होता है? ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टूटना. ठीक है. रिमूव, लाइक रिमूव समथिंग फ्रॉम अ लार्जर यूनिट और होल. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ओके, यस, डिटैच, किसी चीज को डिटैच कर देना. ओके, थैंक यू मैम. नो प्रॉब्लम. Ma'am, if there is a toy and its hand is broken, then can we use it here that
that break means it off. Break it off. Yes, here you can use break it off. मतलब इसे हटा दो, detach कर दो. Okay, they have broken it off. The kids have broken its hand off. If we want to use perfect, ma'am, then how? यहाँ पे नहीं यूज होगा. यहाँ पे कैसे phrasal करेंगे verb मैम हम? use नहीं कि होगा. बच्चों ने उसका हाथ तोड़कर अलग कर दिया. There was a toy and तो कैसे बोलेंगे मैम? हाँ, तो ये सही है. अगर अलग कर दिया, क्योंकि अलग करना ही मतलब है ब्रेक ऑफ का, डिटैच करना. सो आप ये बोल सकते हैं दे हैव ब्रोकन इट ऑफ. ब्रोकन. ओके मैम. ब्रेकअप ब्रोकन हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. तो फ्रेजल वर्ब अगर यूज कर रहे हैं तभी स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब एडवांस वोकैबुलरी में आते हैं, एडवांस टॉपिक में आते हैं. कभी भी आपको बेसिक में नहीं सिखाया जाती है, इंटरमीडिएट के लास्ट अपर इंटरमीडिएट में आते हैं, बिकॉज इनका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज नॉट लाइक कि आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ब्रेकअप जो पढ़ा है, आपने जो सेंटेंस पूछा उसमें हम ब्रेकअप नहीं यूज कर सकते. ऐसे ही ब्रेक ऑफ, जब भी किसी चीज को आपने डिटैच करना है उसको आप ब्रेक ऑफ यूज करिए. जैसे अभी आपने एग्जाम्पल बताया कि बच्चों ने उसका हाथ तोड़ दिया, डिटैच कर दिया, उसे निकाल दिया डॉल से हाथ को. तो या दे हैव ब्रोकन इट ऑफ. उस दिन काफी लंबी हमारी बात हुई थी एंडेड अप पे. एंड अप. सचिन समझ में आया यूज, या अब भी वही है आपकी सुई जहां अटकी हुई थी? यस मैम. यस मैम. क्या मैंने 2 ऑप्शन दिए, उसमें से एक ऑप्शन चूज करिए. समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? बीच में. अच्छा, यू आर हैंगिंग इन देयर. वेरी गुड. Please present tense explain. Kiramatullah present tense we use for everyday life, work, chores. For example, your daily routine, when you talk about something you do every day, it's your habit. That time we use present simple tense. It is the easiest tense if you understand it well. It's simple subject plus first form of verb plus object. For I, you, they, we. First form of verb. But when we talk about third person singular, that is he, she, it, we put s and es with the verb. That's what we call subject verb agreement. Okay. For example, I wake up early in the morning. I brush my teeth. I wash my face. I teach English. I make food. जो भी, whatever you do every day, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. Ihsan Khan, how are you doing? I'm doing good. How about you? Ma'am, Yes, Hajra. where can we use back off? Back off, पीछे हटने के लिए. You don't know Hindi, I believe, right? Yeah, it's fine. Back off. Could you please elaborate again about each and every, as I was a little bit busy with my family, therefore I couldn't attend properly. Bhupinder, I'm so sorry, but you are only one person. We have already discussed it 3 to 4 times, and there are 700 people in the class. So, एक इंसान के लिए मैं पूरा टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करूंगी ना. If you are busy with your family, बाकी स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हैं ना. नहीं, you don't need recorded video देख लिएगा. little bit about I'll take only little bit नहीं होगा ना. Each and every little bit में मैं नहीं बता सकती आपको. It's a big topic. मैंने इसे 3 से 4 बार एक्सप्लेन किया है with examples. आपको पता है क्लास का टाइम 12 बजे, so try to join on time. Now, Hajra, your question about back off. I try to join on class, but default on your Hello app. Hello, ma'am. I'm not getting Hello app Pro member. I'm not unable to speak on the call. Even I escalated this thing on email address. Then they were asking. You're talking right now. You talk in my class every day. Today now Hello, now I'm able to, but before I was not able. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I'm Maha. Oh, Maha. Hi, Maha. How are you? Hi, ma'am. How are you?
I am good. How about you? I'm great. So ये help चाहिए थी आपको सचिन से? Ma'am, no. Ma'am, when I joined Hello English app, ma'am, I don't, my question page is not changed. I also say one page. माँ आप हिंदी में बोल सकते हैं? Are you समझ attending में the नहीं आ रहा। class from Hello Learner Live? Yeah, Maha? ma'am. है, yes. सचिन एक मिनट रुक जाओ। माँ हाँ प्लीज आप हिंदी में बोल सकते हैं? हिंदी आती है आपको? Ma'am, no. अरे She's from Bangladesh. oh, she's from Bangladesh. Okay, Maha, I need you to keep yourself on mute for 1 second because Hajra has asked something. Yes, Hajra, you are there, right? Yes, ma'am. Yes, so Hajra, the phrasal verb that is back off, it means draw back from action or confrontation. Okay, so for example, just back off and leave me alone. Withdraw means Yeah, withdraw ma'am, or claim. I can understand Hindi, Urdu. Yes. So पीछे हटना, किसी को पीछे हटाना किसी काम से, उसको हम बैक ऑफ बोलते हैं. ठीक है? ड्रॉ बैक फ्रॉम एक्शन. Okay, ma'am. Thank you. नो प्रॉब्लम. यस माहा, अब आप अपनी प्रॉब्लम मतलब आप क्या पूछ रही थी, अब आप बोलिए. ओह, शी डजंट नो हिंदी. यस माहा. Ma'am, when I joined class, and then my face is not changed. Oh, this problem, Maha, I told you this problem earlier as well. If you are facing any technical issue, you need to mail Hello English team, because it is not my thing to look for technical errors. I am here to teach. I come live, I teach you, and I just look out for your problems related to the topic or English grammar or English. Ma'am, I have a questions for you. I have a question, not questions. Do one thing, you uninstall the app and again install, and with the same email address and register mobile number, then able to on Hello Class. Ma'am, I have one questions for you. Maha, first say question. Questions is not right. I have one question for you. Please ask your question. Once upon a time, when I was working on the road, I saw a lemon. Ma'am, this sentence, which part of it is? Oh God. Ma, you are making a lot of grammatical mistakes. Can you speak again? And please slow down a bit. Once upon a time, when I was working on the road, I saw a lemon. And this sentence, which part of is this? Oh God. Once upon a time when I was walking, I saw a On the lemon. road, I saw a lion. उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया. I saw a lemon. Lemon? Oh, I thought lion. Then I saw a lemon. Then this sentence, which part of speech? Read. This sentence in which part of speech? When. Oh God, Maha, part of speech. A sentence cannot be a part of speech. It's present simple tense. Once upon a time, I was walking, you said, I believe. It's past continuous tense. Okay? Maha, please work on your pronunciation. Please work on your grammar. You are making mistakes. And when you are speaking, it's really difficult to understand. Work on your pronunciation. And please understand, parts of speech are verbs like noun, pronoun, verbs, adjectives. Sentence is either tense or passive. Okay? So you cannot ask in this sentence which part of speech. No, you should ask which tense I am using in this sentence. So if you're talking about past, that once upon a time I was walking on the road and I saw a lemon, then it's past continuous tense because you are talking about something which you were doing in the past. Okay. And Bhupinder, for you, each and every, I believe you can read Hindi part. Please read this. And it is very simple.
each is used to indicate single thing, like two or more than two, and every is used for a collective thing. Ma'am, please see my comment. Each and every are both used with singular nouns to indicate quantity. Each indicates two or more items, whereas every indicates three or more items. Please understand. Okay? And when three or more items are involved, we tend to use each when we are thinking of the items individually, and every when we are thinking of them collectively. And if you still cannot understand the topic, then I would request you to kindly look for the recording. Maha, one upon a time is wrong. It should be once. Lamamen. What is lamamen? I don't understand. Lemon, the spelling of lemon is Lemon. Once upon a time when jab. Okay. Adverb. When is adverb here? Once upon a time when, adverb of time. Otherwise, when is a WH word. Okay, Maha. So I believe, students, that is all for today. I'll see you in the speaking session today in the evening at 5. So kindly join on time. Bye everyone. Have a good day ahead.